यहाँ पे हेयर कट का भी सेम सीन है। 70 यूरो, 75 यूरो, 120 यूरो, 12,000 रुपये में बाल कटाओगे आप। इससे अच्छा ट्रिम करा लेंगे हम। Look at this. Yeah. Nice. Ciao bello. Ciao bello. Good night. How do we say good night in German? Well, good night. It's not how can I say good night in Arabic? How can I say good night in In German, how do you say good night in German? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. गुड मॉर्निंग फ्रॉम जर्मनी। आज दिन है 21 जुलाई। 9:30 में हमें एक्टिविटी के लिए बोन निकलना है और ऑलरेडी यहाँ पे 9 बज चुके हैं। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। मेरे सारे टीममेट्स नीचे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आज लेट हो गया और आज तो कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी। और सबसे फ़नी पनिशमेंट पता है क्या है? लोगों को मसाज देना अगर तुम लेट हो गए तो। मैं मसाज नहीं देना चाहता यार, इसलिए मैं जल्दी से तैयारी करता हूँ निकलने की। लेकिन दिन काफ़ी, आप देख रहे हो, काफ़ी खिला खिला है। सूरज उगा है यहाँ पे करीब मेरे हिसाब से 10 दिनों के बाद, बिकॉज बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, बाढ़ आया हुआ था। तो आज थोड़ा दिन अच्छा लगा है। आज का दिन बढ़िया जाने वाला है। तो चलिए, दौड़ना पड़ेगा। तो ग्रुप हमारा रेडी है बोन जाने के लिए और वहाँ से हम कोलोन जाएंगे। Tu bello influencer, vieni. Influencer. Ma li fai i soldi He's tu? more influencer than me. And Eh, you tu so- abandoned him. Aspetta, devo fare un bel discorso. Che discorsi devo fare? According to L'Italian? No, come che era il... No, aspetta un attimo. Turning once again, and this time more generally to a question of invasion, I would observe there has never been a period in which in all these long centuries in which we could boast with an absolute guarantee against an invasion could have been given to our people. It's Winston Churchill. Is that Churchill's speech? material. We still fight on the beaches. We still fight with growing confidence and growing strength in the air. You should, como se dice, interview someone. Like, what do you think about? I do it. I want to. I interview drunk people. Drunk people. Yes. But I mean, यार ये बहुत फनी इंसान है यार, बहुत फनी इंसान है। This is my spam. but you should be doing here in the project. तो हमारी बस आ गई है। हम ग्रुप में जाने वाले हैं क्योंकि ग्रुप टिकट है। तो स्पेनिश ग्रुप। कैन वी? ओके। राइट। यहाँ की सुबह कितनी खिली होती है यार। लग रहा है कि हाँ सिटी पूरा अलाइव है, जिंदा है। ओह, लेफ्ट जाने के लिए हमारे जो चीफ हैं वो नाइजीरिया के हैं। और बहुत फनी आदमी है वो जितने भी एक्टिविटीज़ करा था।
तो जितने भी एक्टिविटीज़ कराता है वो इतना फ़न होता है कि हमें सबको मज़ा आता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है। Look at this. Yeah. Nice. ये जो मेरे आगे जा रहे हैं मैं इन्हीं की बात कर रहा था। ओह, हम लोकेशन आ गए, लोकेशन पे आ गए हम। अभी हमारे यहाँ पे एक्टिविटी होगा और एक्टिविटी में बेसिकली हमें ये बताया गया कि जर्मनी के किसी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, वो अपना स्ट्रगल, वो किस तरीके से अपना बिजनेस सेटल किए हैं, यहाँ पर स्ट्रगल किए हैं, ये सब सारे चीज़ों की जानकारी वो देंगे। Everybody thinks you can make a lot of money co-working, but in the end the business model is not very easy. So a lot of people go for the we rent out space. So you give me 200 euros and you get that designated space. We do it in a different way. We say it's all open space. You pay something like a membership. We have different membership models because the biggest benefit for people still is the space. तो ये इनका ऑफिस है जो उन्होंने बिल्ड करा है, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी उनके साथ कॉन्वर्सेशन था हम लोगों का, वो हमें पूरा ऑफिस का ये दिखा रहे हैं सेटअप। To relax your back after sitting. काफ़ी कूल ऑफिस है यार। Ropes in an office, but it's also functional because you can use it to relax your back after sitting and working. So it's also the same thing with the balls. You can sit on a bench, you can sit on a ball which is moving around, so you're more active. And these are all the cables, all the Ethernet cables that we tore out of the walls while renovating. Because we do everything with Wi-Fi, we don't connect with cables. Right. But we thought this is like a nice reminder of the past. So Heide Marie, that's the name of the older lady, she said, keep them, don't throw it away, we will make something out of it. And then she brought it back in here. It looks so aesthetic, you know. It's brutal, but it's also aesthetic. Yeah, exactly, it's so raw. And it's really, really heavy. So this thing is probably something a little under 200 kilos or so. Oh, dude. So the cables are also very, very heavy. Yeah, and here we created boxes. So when you work in them, like you have a little bit more privacy, a little less distraction from the side. You can also move these around, so they have rolls downstairs, so you can just tip them over and then push them around, for example. And this is what we need as a server rack compared to the old one. Yeah. Is that you? Huh? Is that you? Yeah, that's me and that's her. Oh, Nice. God. And that's us together. Yeah. And this is the book we will see later. This is with all the drawings. So, for example, when I showed her the place over the weekend, she started creating this book where she took stuff out of magazines. She made her own drawings, and this is basically documenting the whole creative process. And we put it upstairs for people to take a look at it. And this is, this is in German here, but basically it was like, she was always saying, Cedric, I got this idea, and I said, Heide Marie, great, let's do it. And this was also, she came up with the idea, and I said, okay, let's do it. And it was always just measuring out, thinking about it, making the drawing, deciding, doing it. How did you print that? Because this is printed, right? Or is it painted? This is these plates, we use them as acoustic plates, so we have them at some spaces here. The idea was, so if you could see the pictures, like how it looked before and after, because before us they were a furniture store, as I said. So they used everything to show their stuff. So every piece of wall was a different color,
different material, the floor, and different types of, what do you say, teppich, carpets, different type of carpet. So it was just colorful. And then when you, for example, take a look out of the window, you have the bars. So it's, and behind this, there's just a backyard parking. So it's very ugly, that area. And we asked the owners of the building if they could just put another door and another window so we don't have that view. And I said, no, we're not putting any money. So we came up with the idea of just putting that that wall, which on the other side is Schrank. Cabinet. Yeah. And so that blocks the view, but we have the light coming from upstairs, and then we painted everything white because we wanted to have something like a Zen room, like a relaxation room. And then here, these are actual blankets, and they are also acoustics again for the acoustics. And this has, like as you can see here, for example, this was the drawing that led to building the reception as it is now. So you can already see. I mean, some people look at this book and say, okay, hey, did you do this afterwards? Because it's so funny. You see all these things that really happened here inside the book, but it really came from this. This, for example, is the kitchen table. We see that next, and we build it just like it is here. तो इस रूम को ब्लैक बॉक्स कहते हैं। यूरोप का पहला कॉन्सेप्ट था, इन्होंने बनाया था। अंदर जाकर के आप रिलैक्स कर सकते हैं, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये मेडिटेशन के लिए। But it's actually dark with no light and no sound. We can see When you inside. go inside, for example, you Can we? Yeah, please. You can go around the corner. There's a small bench, and you can sit down if you're. How many people can fit? I think it's better to wait. ये रेस्ट करने का स्पेस है इनका। सारा जगह ही तो मुझे रेस्ट करने वाला ही लग रहा है यार। काम करने का बनाया कहाँ इन्होंने, सिर्फ रेस्ट करने के लिए बनाया। बहुत कुछ जानने को मिला। मैं आपको एक अलग उसका ये बना करके दिखाऊंगा कि जिसको जर्मनी में जॉब चाहिए वो कैसे रीच आउट कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो इंडिया से इधर आना चाह रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है जो लोग अपना यूरोप में बिजनेस सेटअप करने का सोच रहे हैं। तो जो CEO थे उन्होंने मुझे सारा डिज़ाइन अपना दे दिया। मेरे से बात करके उनको बहुत अच्छा लगा और वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे मेरे प्रोफाइल को लेकर के। तो उन्होंने बोला कि ये सारे डिज़ाइन आप रख लो और विल कीप इन टच। और उन्होंने अपना बिज़नेस कार्ड मुझे दिया है और बोला है कि आपको अगर जर्मनी कभी भी सेटल करना हो या किसी भी चीज़ में अगर आपको ये हेल्प चाहिए तो आप बस एक कॉल कर देना मुझे। और हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को भी फॉलो भी किया, जो कि काफ़ी आई वुड से लाइक ही इज़ अ वेरी फेमस गाय इन जर्मनी। Enjoy the rest of your visit. I heard that you're looking at the city center now and learning something about Beethoven. Yeah, hope you enjoy Bonn a little more. Thank you very much. Thank you very much. Lovely time. Nice to meet you. Tu chiede in stanza? तो हमारा एक दोस्त लेना है, वो जा रहा है, उसको थोड़ा काम पड़ गया तो वो एक्चुअली प्रोजेक्ट छोड़ करके जा रहा है बीच में। मेरे दूसरे SD कार्ड का स्टोरेज फुल हो गया है तो मुझे जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक शॉप ढूंढ करके मुझे SD कार्ड खरीदना है। तो हमारे जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने बोला कि मीडिया मार्ट बोल करके यहाँ पर एक शॉप है, तो मैं आपको वहीं पर लेकर के चलता हूँ, आप वहाँ पे SD कार्ड खरीद सकते हैं। वो समझाने ही वाले हैं, अभी वेट कर रहे हैं बाकी दूसरे साथी का जो रोड क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे हेयर कट का भी सेम सीन है। 70 यूरो, 75 यूरो, 120 यूरो, 12,000 रुपये में बाल कटाओगे आप। इससे अच्छा ट्रिम करा लेंगे हम अभी लुडविग बेथोवन के घर में जा रहे हैं जो कि म्यूज़िक कंपोज़र हैं। मोज़ार्ट का नाम आपने अगर सुना होगा तो उनके कॉम्पिटिटर हैं, माने जाते हैं कॉम्पिटिटर। तो ये उनका घर है। अभी हम घर के अंदर जाने वाले हैं। मेरा SD कार्ड अभी तक मिला नहीं है तो मुझे लगता है कि मैं शूट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ मेरे पास सिर्फ 50 सेकेंड्स बचे हैं। बट हाँ, जैसे ही SD कार्ड मिलता है मैं आगे का दिखाता हूँ आपको नज़ारा। He lived in the center. Yeah, reach as far.